आप खुद को किस तरह डिफाइन करेंगे? अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एज एन आर्टिस्ट मैं कैसे डिफ़ाइन करूं, आई वुड से आई एम अ टेक्सटाइल आर्टिस्ट। तो मैं फैब्रिक के साथ ज़्यादातर काम करता हूँ। क्विल्ट मेकिंग, जिसको हम सिंधी में रिल्ली कहते हैं, और एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई, शीशा काम, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मगर ज़्यादातर आई लाइक टू फोकस ऑन सिंधी इंडिजिनस स्टाइल एंड टेक्निक। और मैं प्रिंट मेकिंग भी करता हूँ। आजकल मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है सायानोटाइप में। सायानोटाइप इज़ अ type of printmaking in which you use the sun to make an image, you use the sun to make a picture. It's one of the oldest forms of printmaking. So I would also define myself as a wildlife advocate, as someone who's deeply interested in the wildlife of this country, Pakistan. And of course, as a Sindhi, I feel most closely identified with the wildlife of our province, especially the Indus River dolphin, which is a unique species that only exists in Pakistan. So at the moment, this is what I'm trying to highlight in my work. सियासत से अलहदा करके ख़ुद को आपने अपनी आइडेंटिटी बनाई है एज एन आर्टिस्ट, इसकी क्या वजह थी? सियासत में आई थिंक शुरू से मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने सियासत इतना अप क्लोज देखा था बचपन से, पैदाइश से, एंड आई सॉ कि इनकी क्या असर है एक फैमिली के ऊपर, एक ख़ानदान के ऊपर, हमारे ख़ानदान के ऊपर। एज़ यू नो, मेरे वालिद शहीद हुआ 1996 में, और दादा भी शहीद हुआ, चाचा भी, फुप्पो भी, and they all fought for very just causes. So इनकी कुर्बान की वजह से, इनकी शहादत की वजह से, I believe in Pakistan very much. I love Pakistan, I believe in Pakistan, and this is why I've come back to Pakistan. But politically speaking, the political climate also, as I've seen it evolve from childhood, जो हमारा political climate है, it's very strange. You're not seeing, for example, जो बलूचिस्तान में अभी हुआ था, जो floods जो हुआ था बलूचिस्तान में, flash floods, एक तरफ वो है, दूसरी तरफ है महंगाई, or there's so many problems happening in the country. But then when you look at the political landscape, everyone is fighting amongst themselves and creating entertainment for the Pakistani Awam to distract us from water shortage, climate injustice, floods, oppression of all of the people of Pakistan. So this is why for me the political landscape is not a place anymore to do serious work, and this is why I've kept my focus within the arts, within culture, and trying to raise awareness in whatever way I'm able to. सबसे ज़्यादा काम आप किस मीडियम में इस वक्त कर रहे हैं? मैं फैब्रिक में कर रहा हूँ इस वक्त, टेक्सटाइल मीडियम में कर रहा हूँ, प्रिंट मेकिंग में कर रहा हूँ। मैं जो पीसेस में बनाता हूँ, मैं I call them रिल्ली. Lots of people will say I think it's fabric collage, but for me I think when you say fabric collage, it puts it in another world. For me I call them रिल्ली. Why? Because we wear fabric, right? We're so closely connected to fabric. I think if you were to make art out of painting or sculpture or anything like that, फिर आप आपकी instinct ये हो जाता है कि you want to be distant from it. It's like a holy thing, But when I make something in fabric and in textile, people feel an intimacy with it. They recognize it. They understand what is fabric, They understand what it is more than they understand, I think, a lot of other things. आपके आर्ट की एक ख़ास बात ये भी थी कि आपने LGBT कम्युनिटी के लिए भी जो ग्लोबल मूवमेंट थी उसका हिस्सा रहा है, कुछ उसके बारे में हम बताइएगा। I think एक तो let us ask the question first. You said on a global scale, what about we think about what does it mean to be Pakistani, for example?
लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल ना. अब पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, मगर फिर भी मैं on a globe compared to the global scale, we start small. Pakistan is such a new identity. 1947, right? We were born, we were created, and we were all told कि आज से हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप ईसाई हैं, सिख हैं, पारसी हैं, बुद्धिस्ट हैं. And so then what about LGBTQ? ये एक पाकिस्तानी आइडेंटिटी भी है. It's not separate to Pakistani identity. We are such a young nation. We still don't know कि हमारा पहचान क्या है. We just know कि हम सब एक हैं इसी मुल्क में. And what does it mean to be Pakistani? It means many, many things. And one of those is to be LGBT. It means to be gay, lesbian, transgender, queer. So for me, to be queer is to be Pakistani. To be queer is to be Pakistani. And I think when I lived abroad, I'm also Lebanese on my mother's side, so fine, to be queer is to be Pakistani, it's to be Lebanese, it's to be Musliman. You know, it's part of all these other parts of who I am. So when I lived abroad in the US, people wanted to separate what it was to be Muslim and what it was to be Pakistani and what it was to be LGBT. So when I lived there, you know, it was a very different environment for me. I wanted to come back home. I wasn't very interested in anything there. So the LGBT movement was something I was able to grab onto and identify with. And I wanted to educate people in saying that yes, I can be Pakistani and Muslim and a member of the LGBTQ community at the same time. And it doesn't have any effect, it doesn't contradict either of these things, you know. So that was for a while my art, that was the sort of movement I was a part of. मगर माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत से लोग LGBTQ राइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर महरूब मोइज़ अवान हैं, जैसे बिंदिया राना गुरु हैं, जैसे बहुत सारे लोग अभी इस पे काम कर रहे हैं. सो द वॉइस जो कि मैंने दिया था इसी मूवमेंट को, यू नो, आई फील सेटिस्फाइड विद दैट, क्योंकि अब सब ये आवाज़ उठा रहे हैं, यू नो. तो आपको लग रहा है कुछ एक्सेप्टेंस हो रही है अवाम में, मासेस में इसकी कुछ, या अभी भी बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आता है इसका? इट्स कॉम्प्लिकेटेड, यू नो. मुझे ऐसे लग रहा है कि एक्सेप्टेंस बिल्कुल हो रहा है हमारे सोसाइटी में. एक तो लोग भी, यू नो, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इट इनके अपने कल्चर के थ्रू से, यू नो. तो अगर हम कहेंगे कि मतलब गे राइट्स ना हो, जो हमारे मैसेज हैं वो तो एकदम नहीं समझेंगे कि इसका क्या मतलब है. बट आई थिंक व्हाट्स हैपनिंग नाउ कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी वो आवाज़ उठा रहे हैं सबके LGBTQ मूवमेंट के, चाहे वो गे है, लेस्बियन है, व्हाटएवर. ख्वाजा सरा कम्युनिटी वो आवाज़ उठा रहे हैं और इनकी वजह से हमारी एक्सेप्टेंस शुरू हुई है, क्योंकि लोग समझते हैं कि ख्वाजा सरा क्या है. You know, every single person, it doesn't matter if you're 100-year-old Pakistani or a 5-year-old Pakistani. You have in your life seen many Khaja Sara. And now that voice is being carried and lifted, and it is through them that I think the LGBTQ community will find acceptance. आर्ट्स के हवाले से आपकी इंस्पिरेशन इस वक्त क्या है? इस वक्त क्या है? आई लाइक कि आपने यू सेड इस वक्त क्या है, क्योंकि हमेशा चेंज होता जाता है, यू नो. जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट इंस्पिरेशन है वो है हमारे सिंधी फोक आर्ट है, सिंधी इंडिजिनस क्राफ्ट्स हैं, जो अननेम्ड आर्टिस्ट हैं. मैं इनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ. जो हमारे ख़वातीन हैं जो कि आर्ट बनाते हैं इनके अपने ख़ानदान के लिए और इनके अपने कौम के लिए, इनके अपनी कम्युनिटी के लिए, मैं इनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ. एंड आई थिंक इसलिए मुझे टेक्सटाइल में काफ़ी इंटरेस्ट है, क्योंकि इसका लेबर भी हिडन है. हम तो देखते नहीं हैं,
कि जो जो कपड़े जो हम पहनते हैं हम नहीं देखते ना कि कितना इसमें लेबर लोग रखते हैं इसमें, you know, like, and that for me is something that I'm very very interested in. So for me, all the work that I do with my textile, it's usually all me. And I'm not working on such a huge scale. I'm working as an artist for exhibitions, for galleries. So, you know, for now, I don't need the extra labor. But for me, it's very important that I do the work myself, so I understand my medium, I understand the fabric, right? And then a friendship arises between the work that I'm making and myself. I start to understand the piece that I'm making and I become attached to it, and in some way it becomes like a child of mine. You know, you feel like you've birthed something because you've put that labor in it and you've been looking at it so closely for such a long time, you know. Other artists who have inspired me, you know, I've definitely been inspired by Arif Mahmood. Actually, he was a big inspiration. He's a photographer. इसका style काफ़ी raw है, काफ़ी high contrast वाली तस्वीरें हैं. So उनसे मैं बहुत inspiration लेता हूँ. And other artists are Sunil Gupta. He's an Indian artist. He made a lot of queer photography art back in the 90s, 80s and 90s. And then other people that I've been interested in, poster art also. South Asian poster art. You know, the poster art we see especially अहले शिये की जो तस्वीरें जो लोग लगाते हैं इमाम हुसैन के, इमाम अली